Good morning, everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. So today we will start our next topic, and it's also our next unit, random variables and distributions. Is this visible? Screen visible hai? Yes, ma'am. So what are the random variables? The first thing is random variable means a real value, a real number x that is connected with the outcomes of a random experiment. Random experiment means suppose we have a coin, and if we tossed a coin, so we have two possibilities here. Either head will come or tail will come. एक कॉइन को हमने टॉस किया है तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. So this is actually the set of all possible outcomes means the sample space. Set of possible outcomes. In the same way, suppose if you toss two coins, so we have sample space like head head, head tail, tail head, tail tail. तो दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है. सैंपल स्पेस में हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज आती हैं. इन द सेम वे सपोज इफ यू टॉस अ डाइस में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मेरे पास. व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस. इधर 1 will come, 2, 3, 4, 5, 6. So whenever you do an experiment here, we called it, this is a random experiment. Random experiment is nothing but you can say that the probabilistic, we can say that a mathematical description for any probabilistic situation. We called it the random experiment. And if we do a random experiment, then whatever the outcomes, the set of all possible outcomes, this is a sample space here. Now come to the random variable. What we call the random variable, it means a real number x that is connected with the outcome of a random experiment. Random experiment E. Here we denote the random experiment by E. So let us see an example. Suppose if you toss a coin, then we have this is the set of possible outcomes here, right? Head head, head tail head, and tail tail. If we denote the random variable in which the number of heads are 0, 1, and 2. So value of x will be, here we have 2 heads, so value of x is 2. Head के लिए हमने जो denote करा है वो हमने ये value assigned यहाँ पर करी है. तो इसी चीज को बोला गया है random variable. Means whenever we do an experiment, we consider the random variable in which the number of heads are 0, 1, and 2. So here the value of x is 1. Value of x here is, it shows our head. Value of x is 1, and in this case we have tail and tail, so head is 0. So this is basically the random variable. Now random variable is further classified in 2 categories: discrete random variable and continuous random variable. Discrete means, as the name indicates, if it takes at most countable number of values, so we call the discrete random variable. And if we take all the possible values between a certain limit, then the variable is known as continuous random variable. किसी एक limit के बीच में जब lie कर जाएगा तो वो continuous हो जाएगा. And if you can count the variables, then this is the discrete random variables. In other words,
a real valued function which is defined on discrete sample space is called a discrete random variable. जैसे कि यही example है, this is the case for discrete random variable. Now next thing is the probability mass function and probability density function. Probability mass function means this is actually the probability distribution of discrete random variable. Discrete random variable के साथ जो distribution associate होगा that is the probability mass function, और in short हम इसको PMF भी लिख देते हैं. So we have two conditions for the probability mass functions here. It must satisfy these conditions. So suppose x is one dimensional discrete random variable which take the values. ये मेरे पास एक discrete random variable है जो यहाँ पर suppose इस तरीके की countable values associate करता है, और इसके corresponding जो probability है, this is p of x1, p of x2, p of x3 and so on, and in general we write it like p of xi. So for the probability mass function, this p of xi must be greater than equals to 0 for all I, and sum of all the values, all the probabilities will be 1. Total probability will be 1. So these are the conditions which must satisfy for the probability mass function. In the same way, probability density function means it is for the continuous random variable, and we, in short, we written as PDF, probability density function, and conditions here for we denote it by fx of x or f of x. So the total in the throughout the limit minus infinite to infinite, suppose this is the range here, then integral from minus infinite to infinite f of x dx will be 1 and f of x will be greater than equals to 0. These are the conditions for the probability density function. Is this clear? यहाँ तक क्लियर हुआ? रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम वेरिएबल इज एक्चुअली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, which is discrete random variable or the continuous random variable, and these two are the distributions for probability for discrete and as well as continuous. Means probability mass function is for the discrete case and probability density function for the continuous case. यहाँ तक कोई डाउट किसी को? Is this clear? So let's see the problem. Is this clear? Yes, ma'am. Now I'm going to take a problem for these random variables in both the cases. Suppose question is a random variable x has the following probability function. Has the following probability function. So values of x here and corresponding the probability. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पर ये कैसा रैंडम वेरिएबल है? कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा ये? Which type of random variable is this? I'm talking about the random variable. कैसा रैंडम वेरिएबल है? दो तरीके के रैंडम वेरिएबल मैंने अभी आपको बताए हैं.
I'm saying discrete random variable, discrete or continuous. Discrete means जो एक finite number of values लेता है. So continuous means which is defined over the range. So you see that यहाँ पर जो x की values है, we have total 8 values here. So this is the discrete random variable. K, 2k, 3k, k square. This is again 2k. And this is 2k, 3k square, k square, 2k, 3k. K square, 2k square, 7k square plus k. Now, first thing is find out the value of k. Second, evaluate probability when x is less than 6 and x is greater than equals to 6. No need to write attendance, please. No need to write it. Third one is probability when x lies between 0 to 5, and at the fourth point, determine the distribution function of x. तो हमें ये चार चीज यहाँ पर इवैल्यूएट करनी है और एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मेरे को यहाँ पर दी हुई है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मेरे को दिया हुआ है. तो कैसे करेंगे? मैंने आपको अभी दो इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए दो कंडीशंस बताई थी. कंडीशंस थी कि पूरी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज विल बी 1 एंड इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. So you know that here we have total 0 से 7 तक लाई कर रही है. तो from that particular property, the sum of all the probabilities will be 1. So it's equals to means k plus 2k plus 2k, 3k, k square, 2k square, 7k square plus k is equals to 1. Is that okay? Now, क्या वैल्यू होगी इससे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 by 10. 10. Right? 10k square plus 9k minus 1 is equals to 0. और 10k minus 1 k plus 1 is equals to 0. So k की वैल्यू क्या होगी? 1 by 10. It can't be negative. It's the probability. So it must be greater than or equals to 0. Is this okay? तो फर्स्ट तो यहाँ से इवैल्यूएट हो गया. नाउ सेकंड पॉइंट पे मुझे इवैल्यूएट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 6 एंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6. प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 6 का क्या मतलब है? कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएट करनी? 5 तक. ओके. एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 मींस जो 6 से ज्यादा है. सो वी हैव सिर्फ यहाँ पर बचेगी मेरे पास, देखो इसको कैसे लिखेंगे.
probability when x is less than 6. It means probability when x equals to 0, x equals to 1, x equals to 2, और कहाँ तक चली जाएगी 5 तक. लेस देन इक्वल्स टू 6 मीन 6 से जितनी भी कम है. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ k हियर. इसके लिए तो 0 हो गई. दिस इज 1/10, 2/10 and this is again 2/10, 3/10 और 1/100. ठीक है, यही होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5. Fine. So after evaluating it, we will get 81/100. So this is the value when probability is x is less than equals to 6. Now, अब मुझे यहाँ पर evaluate करनी है. थर्ड पॉइंट पे probability when x is greater than equals to 6. तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 minus probability when x is less than, because the sum of all the probability is 1. So probability when x is less than 6 और x is greater than equals to 6, इसका जो sum होगा वो 1 होगा. तो यहाँ से ये directly evaluate हो सकती है. It's 81/100 and you will get 19/100. In the next point, we have to evaluate probability that lies between 0 to 5. So 0 to 5 के बीच में हमें 0 भी नहीं लेना है और 5 भी नहीं लेना है. So value that lies between 0 to 5 is 1, 2, 3 and 4. Just add it down. So you will get the value 1, 2, 3 and 4. क्या होगी इसकी 8/10. k plus 2k plus 3k plus 2k plus 2k plus 3k. 8. मैम ये थर्ड स्टेप वापस समझाना. Your voice is not clear. Please repeat again. This is 8/10. Now, in the last point, we have to determine the distribution function of x. The distribution function of x के लिए means जो probability मुझे given है, we have to substitute that particular value here. k की value already evaluate हम कर चुके हैं, which is 1/10. So x की value जो मुझे दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5. अभी इस पॉइंट को आप छोड़ दो, इसको हम बाद में करेंगे. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस करेंगे एंड वी विल डू इट. सो लीव दैट पॉइंट देयर. Just do these 3 parts here in which we have evaluated the value for k and these probabilities in which x is less than 6, greater than 6 and lies between 0 to 5. So this is the example for discrete random variable. Now I am going to take problem that is based on the continuous random variable. Question is, next question.
A continuous random variable x has a probability density function. जब भी continuous random variable की बात करेंगे तो हमारे पास जो distribution function होगा that is the probability density function and is defined as 3x square and x lies between 0 to 1. So from this probability density function इससे पता चल रहा है कि ये जो variable है it is the continuous random variable because x is defined over the range here. So find out the value of a and b. Find a and b such that probability x is less than a, x is greater than a. Is equals to half. And the second one is probability x is greater than b is equals to, तो a और b की वैल्यू यहाँ पर हमको इवेल्युएट करनी है. So can you evaluate it? Can you evaluate it? First point में देखो probability of x is less than a equals to half. What does it mean? What does it mean? It means that 0 to a f of x dx is equals to 1 by 2. Now function is given here 0 to a 3x square dx is equal to 1 by 2. Please mute your mic. Or we written as 3x cubed by 3, 0 to a is 1 by 2. It means what will be the value of a? A cube is equals to 1 by 2 or a is equals to 1 by 2 raised to the power 1 by 3. In the same way, second part में जो दिया हुआ है x is greater than b is 0.05. x is greater than b, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर रेंज है it's 0 to 1 means whatever the values will lie between 0 to 1. a और b 0 to 1 के बीच में ही lie कर रहे हैं. It means that will be b to 1 f of x dx. This probability will be b to 1 f of x dx, or it's 3x square dx is 0.05. Now you simply evaluate it. Just integrate and find out the value for b. So this is the problems that is based on continuous random variable, and it's equals to 3 x cube by 3. d21 is 0.05 means इसको हम लिख सकते हैं
1 by 20. 1 minus b cube is equals to 1 by 20, or b cube is equals to 19 by 20. So b is equals to 19 by 20 raised to the power 3. This is the solution. Is this okay? Is this clear? Ma'am. So let's see one more problem. Question 3. Let x be a continuous random variable with probability density function this is ax, a minus ax plus 3a or 0 टेल्स पेयर. तो ax वैल्यू है जब x लाई कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में, when it lies between 1 to 2 and 2 is less than x is less than 3. When it lies between 2 to 3, then determine the value of a is constant, and compute when x is less than equals to 1.5. So कैसे करेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दे रखा है, मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी मेरे पास बाय द प्रॉपर्टी इट विल बी फर्स्ट पॉइंट कांस्टेंट ए डिटरमिन करने के लिए माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1. ठीक है, सबका जो सम होगा वो 1 होगा. नाउ ब्रेक दिस इंटरवल. तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 to 2, 2 to 3 और 3 to इंफिनिटी, इसको ब्रेक कर सकते हैं. Is this okay? Can we rewrite it like? ऐसे लिख सकते हैं? Yes, ma'am. तो माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो तो गिवन ही नहीं है, सो वी टेक इट 0. 0 से 1 के बीच में माइनस इंफिनिटी से 0 में 0 गिवन है, दिस इज एल स्क्वायर. सो ये वाला तो इंटीग्रल हो गया हमारे पास 0. नेक्स्ट 0 से 1 के बीच में जो फंक्शन की वैल्यू है वो हो गई ax dx. 1 से 2 के बीच में हो गई a dx. 2 to 3 के बीच में जो वैल्यू गिवन है, और लास्ट वाला इंटीग्रल भी हो गया 0. तो नाउ इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर द कांस्टेंट. सो इट्स इक्वल्स टू a x square by 2 0 to 1 a square by 2 a dx. sorry, it will be a तो कांस्टेंट हो गया x 1 to 2 plus
माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 ए एक्स, और ये हो गया 2 to 3 इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इज a 1 minus 0, 2 minus 1 minus a by 2. This is 9. No, it will be 4 minus 1. 2 minus 1. This will be 9 minus 4. 3a, 3 minus 2 is equals to 1. So after evaluating it, you will get the value of a is 1 by 2 here. यहाँ पे 1 by 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू. Now in the next part, you have to evaluate the value, find out the probability when x is less than equal to 1.5. So how can we evaluate it? तो मुझे यहाँ पर evaluate करना है in the second part, probability 1.5. इस बात का क्या मतलब है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1.5 तक की मेरे को इवेल्युएट करनी है. हम कैसे कर सकते हैं? अगेन माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर हम ब्रेक करेंगे इसको 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 1 to 1.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो इस पर तो वैल्यू कितनी हो गई? माइनस इन्फिनिटी से 0 पर तो 0 हो गई. 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू गिवन है, इट्स गिवन दैट ए एक्स, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी ए एक्स डी एक्स, और इस वाले के लिए जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1 to 2. 1 से 1.5 के बीच में भी वैल्यू कितनी होगी इसकी? ए डी एक्स. सो यू कैन सिंपली इवैल्यूएट द वैल्यू. ए की वैल्यू हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं, इट्स 1 by 2, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे. ए एक्स स्क्वायर बाय 2 0 to 1 प्लस ए 1 to 1.5, so it's equals to a by 2 plus 0.5a, and putting a is equals to 1 by 2. यहाँ पर आप 1 by 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अगेन you will get the value of p 0.5, whatever the value you will get 1.5. Is this okay? Yes, ma'am. So random variables का concept यहाँ पर over होता है. In the next class, we will start with the expectations and its properties, right? So तब तक आप इस पर based कुछ problems करो. I will share some problems based on the random variables with you in the Google Classroom. और next class जब भी होगी, be likely to be Thursday में देखते हैं next class, तो तब इसको continue करेंगे. Okay, please. Present. Thank you. Write your मैम attention. present बंद करो मैम, present लगानी है. Please do mention your branch also. Wait a minute.
Yes, Kajal, any problem? No, ma'am. Wait a minute. Need to change the settings. Now you can write the present here. Please write down your attendance. मैम अभी भी चेयर से बदली आ रहा है प्रॉब्लम हो रही है, वो सेटिंग्स चेंज नहीं हो पा रही है. Now just check it, please. It changed now. Yes. Done? Okay. So do try to solve the problems and we'll continue in next class. Thank you, ma'am.